आगे सब लोग। Yes, sir. All right. Okay, Yes, good. sir. Very good. Very good. Very good. So, any questions in EM log now? बेसिक में आप समझ गए प्रिंसिपल क्या है, किस फैक्टर पे ईएमएफ डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड करंट कैसे डायरेक्शन पता करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस प्रिंसिपल को कैसे हम यूज करते हैं स्पीड थ्रू वाटर के लिए, क्या कंस्ट्रक्शन होती है, द मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लो सेंसर एक्सेट्रा, एंड फाइनली द लिमिटेशन। एकदम सिंपल। सर जब इतनी सारी लिमिटेशन है तो यूज करते ही क्यों है? क्योंकि आपको स्पीड थ्रू वाटर चाहिए, कहां से मिलेगा? If you want speed through water, how are you going to get it? तो You will डॉपलर say लॉ से भी मिल रहा है ना सर? एग्जैक्टली, मैं वही कर रहा था कि आप बोलेंगे डॉपलर लॉ से यूज कर लो, उसकी अपनी लिमिटेशन होगी। तो हम सर यहाँ मेनली पे ये था कि पानी चेंज होने के साथ इसमें मतलब एरर दिखा रहा है स्पीड में, वो मेन एक फैक्टर था जिसके लिए मैंने ये पूछा आपसे। ओके, तो उसका जवाब देते हैं। When do we require speed through water? In coastal area or in deep sea? हमें स्पीड थ्रू वाटर की जरूरत कब पड़ती है? जनरली कोस्टल वाटर्स में पड़ती है या सर डीप सी सर। डीप सी में सर? डीप सी में वहां पे स्पीड थ्रू वाटर चाहिए, वहां पे सैलिनिटी चेंज होती है जनरली? नो सर। नो। तो ठीक है, सैलिनिटी चेंज कहाँ होती है? कोस्टल वाटर में। वहां मुझको स्पीड थ्रू वाटर जनरली चाहिए ही नहीं, तो इट्स ओके ना? राइट सर। सो आई वांट स्पीड थ्रू वाटर, तब मुझको सही से देगा नहीं, देगा भी तो उतना अच्छा नहीं देगा जितना कि ईएम लॉग देगा, और वो मुझको स्पीड थ्रू वाटर डीप सी में ही चाहिए, तो मिल रही है मुझको। तो ये लिमिटेशन होने के बावजूद इट इज ऑल राइट। अभी आप बोलते हैं कि स्पीड थ्रू वाटर, स्पीड ओवर ग्राउंड ये नहीं देता, लिमिटेशन प्रिंस। राइट सर, लिमिटेशन। व्हेन डू वी रिक्वायर स्पीड ओवर ग्राउंड? इन कोस्टल नेविगेशन सर। तो नहीं देता है तो मत दे भाई, मुझको वहां पे स्पीड चाहिए ही नहीं, वो मुझको डीप सी में चाहिए, ये दे रहा है। मुझको कोस्टल वाटर में नहीं चाहिए, ये नहीं दे रहा है स्पीड ओवर ग्राउंड। ठीक है ना? जी सर। सो लिमिटेशन है, basically these limitations we talk about, it is not only handicap, it is just to know about the nature of a device। ठीक है ना? अब मान लो आप प्रिंस, अपना फोटो दिखाओ प्रिंस, मुझको फोटो दिखाओ। ओके प्रिंस, आपसे बात करते हैं। आप वजन उठा सकते हो? कुछ वेट उठा सकते हो? उठा सकता हूँ सर। 50 किलो 60 किलो तक उठा लोगे मेरे ख्याल से, हट्टे कट्टे जवान हो। क्विंटल भी उठा लूंगा सर। चलो क्विंटल भी उठा लो। क्विंटल के बाद वो तो लिमिटेशन होगी ना कि 100 किलो के बाद नहीं उठा सकता। ये सर। तो आपके वेट उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, आप क्यों तो बात कर रहे हो कि हाँ मैं वेट उठा सकता हूँ? लिमिटेशन है, इतना कर सकते उतना नहीं कर सकते। राइट सर। तो जितना कर सकते हैं उसके बारे में मैक्सिमाइज करेंगे हम अपने इस लिमिटेशन में, खूब वेट उठाएंगे, डंबल करेंगे, साइकिल उठा के दौड़ेंगे, जो करना है करेंगे। लेकिन लिमिटेशन जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ तक मेरी लिमिट है, ये नहीं हो सकता, यहाँ तक तो हो सकता है ना? यस सर। ओके, तो हम फिर बोलेंगे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आंखें देख सकती है, पढ़ सकती है, लेकिन मैं चीज को यहाँ पे पढ़ूं तो पढ़ाई कर सकता हूँ क्या? नो सर। एकदम यहाँ पे रख के कोई चीज पढ़ूं तो पढ़ पाऊंगा?
नो सर। नहीं, तो हम बोले कि आ का फिर फायदा क्या है? आई गेट योर पॉइंट सर। वेरी गुड। चलो वीडियो ऑफ, आगे बात करते हैं। राइट, एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? ईएम लॉग, एनी मोर क्वेश्चंस? नो। तो अगला टॉपिक क्या है पढ़ने के लिए? What is the next topic? Doppler log. Very good. So Doppler log is another device which is giving us speed, but this Doppler log is predominantly used for speed over ground. मुझको कब चाहिए? Speed over ground in coastal water. When I see my movement, my ship's movement with respect to a fixed object. मैंने इंजन नहीं चलाई। हाँ जी, कुछ बोले? नहीं सर, आपका ही आवाज फिर से है। अच्छा, ओके, मेरी आवाज में। सो आई एम नॉट रनिंग माई इंजन, मैं खड़ा हूं, अफ्लोट हूं, करंट आती है, करंट से मैं बहता हुआ चला जाता हूं, बॉय की तरफ जाके टकरा जाऊं। करंट से मैं तो मूव करता हूं, बॉय मूव नहीं करती। तो मुझको देखना है कि मैं उस बॉय के रेस्पेक्ट में, विच इज अ ग्राउंड ऑब्जेक्ट, उसके रेफरेंस में कैसे मूव कर रहा हूं। मैं जब फ्लो कर रहा हूं तो उससे क्या अलग से निकल जाऊंगा? सीओजी, कोर्स ओवर ग्राउंड। मैं उससे अगर टकराऊंगा तो कितने देर में टकराऊंगा, कितने स्पीड से जा रहा हूं? एसओजी। सो इन कोस्टल वाटर वी रिक्वायर स्पीड ओवर ग्राउंड। ईएम लॉ को हमने देखा कि इट इज ओनली गिविंग अस स्पीड थ्रू वाटर, नॉट स्पीड ओवर ग्राउंड। Here is the new device, another device which is very good for getting us the speed over ground. Here the reference is to be taken from the ground. Here in our case is the sea bed. हम सी बेड के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कैसे चल रहे हैं। वहां सिर्फ पानी से रेफरेंस ले रहे थे कि मेरे हल से कितना तेज पानी जा रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ करेंगे ऐसा ताकि हम देखें कि सी बेड के रेस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहे हैं। इज द सी बेड ग्राउंड ऑब्जेक्ट? इज इट फिक्स्ड रेफरेंस? यस इट इज। So the term Doppler log is used because of a principle that it is using. Like the EM log was using electromagnetic induction. This one is using Doppler shift effect. Doppler log uses the principle of Doppler shift effect. अब ये Doppler shift effect है क्या? By the way, name Doppler was the name of a scientist. उन्होंने इस फीचर को ऑब्जर्व किया, इस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया, स्टडी करी, उसके बारे में कुछ बताया, तो उन्हीं के नाम पे हमने कह दिया कि वी विल कॉल दिस डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट। जैसे फैराडेज लॉ बोलते हैं वैसे डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट। व्हाट इज दैट? इट इज टू डू विद द वेव प्रोपगेशन। डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट has to do with wave propagation. थोड़ा सा आइडिया खाली लग जाना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो वेव इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सन की एनर्जी अर्थ तक पहुंच जाती है, कैसे पहुंच जाती है? लाइट वेव्स। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? साउंड वेव्स। साउंड। एक पूल में, एक पानी के तालाब में एकदम शांत पानी है,
एक मैंने पेपर बोट वहां पे डाल दिया, वो भी एकदम शांत पड़ा हुआ है। मैं एक पत्थर उठाता हूँ और यहाँ दूर में एक पत्थर फेंकता हूँ, रिपल्स जाती है जाती है जाती है और पेपर का बोट जो है वो हिलने लगता है। हिलता है कि नहीं? यस सर। दैट मीन्स मैंने एनर्जी अप्लाई करी ताकि उसको मूव कर सकूं, मूव कर दिया। यहाँ पे जो मैंने कोशिश की, थ्रू द वाटर, द रिपल्स ऑफ द वाटर is going and moving it through the waves, I was able to move the paper boat. So wave is the energy transfer method. Various kind of waves can be there, जैसे रेडियो वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, साउंड वेव्स हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वगैरह वगैरह। Different kind of waves are there. Here we are talking about sound waves, or more generally speaking, acoustic waves. acoustic, acoustic wave. ये acoustic wave है क्या? Anything to do with hearing, with the sound, is acoustics. So acoustic wave is basically the sound wave. When we talk about waves, there are a few terms which are used with this: frequency, wavelength, speed, time period. One of you please tell me. Okay, आदित्य को पकड़ते हैं। आदित्य, Yes, sir. Can you tell us a little bit about frequency of the wave? What does that mean? You can say yes or you can say no, sir, I don't know. No issues. What is frequency of the wave? Sir, the rate at which the wave is traveling. No, not the rate at which the wave is traveling. That is the speed of the wave. If the wave is traveling 10 meters in 1 second, we say the speed is 10 meters per second. If it is traveling at 1000 meter per second, मतलब 1000 एक सेकंड में 1000 मीटर जाता है, so we say it is 1000 meter per second. It is not frequency, it is the speed of the wave. Sahil, Sahil, Yes, sir. tell us about frequency. So, in general, In general, no problem. Yes. You can say yes or you can say no, sir. नहीं आता sir. the occurrence of a repeating event per unit time. और तेरा ये तो तुम occurrence of repeating events, तुम तो सीधा philosophy में पहुंच गए. Okay. Sir, 1 cycle per second of a wave. Number of cycles per second. Number of cycles per second. Yes. वेव में क्या होता है? चीज रिपीट हो रही है, जैसे तुमने कहा occurrence of the same cycle again and again. So एक वेव में खत्म हुआ, फिर से शुरू हुआ, खत्म हुआ, फिर से शुरू खत्म हुआ, तो that is oscillatory motion. एक टाइम में एक साइकिल खत्म होता है. So in 1 second how many cycles? अगर इतने बार हुआ तो यह है फ्रीक्वेंसी, अगर इतनी बार हुआ तो वो है फ्रीक्वेंसी, अगर बहुत से बार हुआ एक सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी इज हाई. फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रिपीटेशन ऑफ द सेम इवेंट. हम एक बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, बोलते हैं ये फला नंबर की बस. सर एस बैंड एक्स बैंड रडार में जैसे है सर. हाँ, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी ना एस बैंड जो बोलते हैं, यस सर. उसको एस बैंड फॉर एग्जांपल, तो उसको और किस नाम से जानते हैं उस रडार को? लॉन्ग एस बैंड इज 3 गीगाहर्ट्ज, करेक्ट? यस सर. और also it is called 10 centimeter radar, is that correct?
Yes, sir. So 10 centimeter is the wavelength, 3 gigahertz is the frequency, और इस फ्रीक्वेंसी बैंड को बोलते हैं एस बैंड के नाम से, इसलिए एस बैंड. So anyway, wave is the method of transferring energy. When I'm speaking to you, I'm speaking with a given frequency. आपने सुना हुआ है पहले, इसलिए मेरी आवाज पहचानते हैं, आपकी आवाज में पहचानते. I will be producing a new sound which is not of the frequency which I am using right now. Nobody will laugh, or if somebody is laughing, don't switch on your camera so that I can see you're laughing. But I'm making different sounds, different frequencies, so that you can understand what is the meaning of changing frequency. I'm speaking right now, I change my voice. I'm speaking to you in a new frequency, which is the lower frequency than the earlier one. What I was speaking, right now I'm speaking, I used a frequency which is lower. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I increase the frequency. 1, 2, 3, 4. All the things, same sound, but different frequencies. The thicker the voice, the lower the frequency. Sharper the voice, higher the frequency. लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज फटे बांस जैसी हम जैसे मोटी होती है. What is the difference? Who has got which kind of frequency? The male voice and female voice. So female voice higher frequency, male voice lower frequency. Deep frequency होती है. Female voice higher frequency, male Male voice voice lower. lower frequency. So there can be change in frequency. आप म्यूजिक सुनते हैं, उसमें एक ओके, मैं गिटार लाता हूं आपको डिफरेंस खाली बताने के लिए. जस्ट 1 सेकेंड. There are many strings here. This is the low frequency. Now the higher frequency. Lower frequency to higher frequency. Higher frequency to lower frequency. Understood? Yes, sir. So the frequency can be high, frequency can be low. What Mr. Doppler found out, which is known as Doppler shift effect, is that when there is a relative motion between source and observer, मैं अभी बजा रहा था, आप सुन रहे थे. Source was the guitar, आपके कान was the receiver, observer. एक सुनने वाला, एक बोलने वाला. अगर बोलने और सुनने वाला दोनों स्टेशनरी हैं, तो जो बोलता है वही सुना जाता है. But if there is a relative motion between them, either the source is moving towards the observer, or if the observer is moving towards the source, or if they are both moving towards each other, or it can be other way around, if they're getting away from each other. If there is a relative motion, that means what? The distance between the two is changing. If the principle, if the source and observer has got a relative motion, there is an apparent change of the frequency received by the observer.
जो मैं सुन रहा हूं, मैं रिसीवर हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, जो मैं सुन रहा हूं उसके फ्रीक्वेंसी में सुनने में फर्क आएगा अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड और मेरे बीच में रिलेटिव मोशन। एग्जाम्पल, आप ट्रेन की रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये बहुत लोगों ने आपने एक्सपीरियंस किया है, पता नहीं सुना सोचा है कि नहीं इसके बारे में, बट आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उधर से एक ट्रेन आती है तेजी से, ट्रेन आती हुई शी इज ऑल्सो ब्लोइंग द हॉर्न। व्हेन यू आर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द हॉर्न, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? Like that. Is that happening like that? Yes, sir. Remember, the sound that you were listening to is changing. It was not when the train was coming, you are not listening like, no, you are not listening like that. When it was moving, it was coming close, you were listening to the sound like, Lower so to what high, is sir. happening? Anjay? Lower to high. Lower to higher and higher to lower. When the train was coming, when we were coming close to each other, then it was rising high. The pitch was increasing or the frequency was increasing. When it is getting away, the frequency goes down. आप लोग बहुत लोगों ने रेस देखा होगा, कार रेस, बाइक रेस, टीवी में भी देखा होगा, कैमरा लगा रहता है, कैमरा तो फिक्स्ड है अपनी जगह पे ग्राउंड पे, लेकिन जो गाड़ियां आती है उसका इंजन आवाज कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ साउंड डू वी हियर थ्रू द कैमरा? माइक्रोफोन जो उसमें लाइक दैट। सो देयर इज एन apparent change in the frequency when there is a relative motion between source and observer. Is the statement clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Suppose there was no relative motion, then how much of change will be there? दोनों अपनी जगह खड़े। जवाब दो, इतना वेट किसके लिए कर रहे हो? If No there is change, no sir. relative motion, how much of change will be there? Minimum change. हाँ जी? Sir, No no change. change. Constant No रहेगा. No change. Simple as that. Simple as that. अभी हमने बोला कि रिलेटिव मोशन होती है तो चेंज होता, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो अब इसी चीज को हम क्या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा चेंज है तो रिलेटिव मोशन थोड़ा थोड़ा है, अगर कोई चेंज नहीं है तो रिलेटिव मोशन 0 है, अगर ज्यादा चेंज है तो ज्यादा रिलेटिव मोशन है। कैन वी से दैट? Yes, sir. तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी रीड कर सकूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी रीड कर सकूं और उसकी डिफरेंस को मेजर कर सकूं कि भाई इतना था अब इतना हो गया, तो कैन आई मेक अ रिलेशनशिप विद द स्पीड? Yes, sir. So this is the principle which is used to find out the relative motion. Now when the ship is moving, the seabed here, is she moving with respect to the seabed? Yes, sir. So we take the reference of this with the seabed, क्योंकि seabed के reference में हम move कर रहे हैं। In our case, in the ship's case or the Doppler law case, source and receiver, observer of the sound wave is same. मैं ही बोलता हूं, मैं ही रिसीव करता हूं। कैसे? तो शिप के बॉटम से कुछ साउंड वेव्स ट्रांसमिट की जाती, वो जा करके टकरा करके सीबेड से वापस आता है। साउंड वेव्स get reflected, correct or not? Or any wave get reflected, is that correct? Yes, sir. Yes, sir. So मैंने साउंड वेव भेजी,
ऐसे ही बॉटम पे, शिप के बॉटम पे लगा रहता है, वहां से मैंने भेजी, जाके टकराता है सीबेड से और एनर्जी वापस आती, मैं आती एनर्जी को रिसीव करता हूँ, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिसीव करता हूँ, मैंने ट्रांसमिट किया और जो नीचे से आ रही है उसको रिसीव करता हूँ। तो रिलेटिव मोशन कैसे हुआ इसमें? टू अंडरस्टैंड दैट, सपोज देयर इज अ वॉल, आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द वॉल, मैं चल रहा हूं उसकी तरफ और एक बॉल फेंकता हूं दीवार पे। जैसे ही मैंने दीवार पे बॉल फेंकी, उस समय मेरा डिस्टेंस होगा दीवार से कुछ, सही है नहीं? कोड पे Yes, sir. चलते हैं, कोड पे जाते हैं। लेट मी सेट अप द कैमरा। All right, code visible. What happens in case of ship's Doppler log? Under the keel of the ship, there is a device fitted, a small device which is known as transducer. This transducer is something which converts electrical signals into sound waves. तो हम साउंड वेव्स को ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन से दिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से। This electrical signal is coming from the bridge, जो डिवाइस है डॉपलर लॉग का, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दी जाती है इसको, और ये प्रोजेक्टेड फॉर्म में towards the seabed it is transmitting the signal. This is the acoustic waves. The signal is hitting the seabed and it is getting reflected back. When it is coming back, meanwhile जहाज तो आगे निकल गई है, तो ट्रांसड्यूसर यहां पहुंच गया होगा, क्योंकि जहाज आगे v के स्पीड से चल रही है। So when it is receiving, the distance is this between the two. Now, is there a difference between the two positions here? इस दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं? Yes, sir. तो दैट इज रिलेटिव मोशन। जब ट्रांसमिट किया था तो यहाँ था, रिसीव किया तो यहाँ, तो रिलेटिव मोशन हो गई कि नहीं दोनों के बीच में? Yes. Yes, sir. हाउ मच इज दैट? इट इज दिस मच। अगर हम इसको एक परपेंडिकुलर डालें तो ये है हमारा रिलेटिव मोशन। इसी रिलेटिव मोशन को हम यूज करते हैं v के स्पीड में निकालने। अगर इस ट्रायंगल को देखें हम यहाँ पे, तो इज दिस ट्रायंगल द सेम ट्रायंगल जिसमें जहाज ये आगे जा रहे हैं एट द स्पीड ऑफ v? इज दैट v? इज दिस द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन व्हिच इज लाइक दिस? और जो हमने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया वो ये, इज दैट करेक्ट? ये वाली, ये वाली, ये, और ये जो परपेंडिकुलर है वो ये। इज दैट ओके? द सेम ट्रायंगल बीइंग शोन हियर? Yes or no? In this, the speed of the ship was v, मतलब ये वाली जो है it is v and it is 90 degree. Incidentally, जो ट्रांसमिशन होती है वो एक फिक्स्ड एंगल पे है अल्फा। जो एंगल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट इज आल्सो नोन एंड दैट इज अल्फा, नॉर्मली 60 डिग्रीज। बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस होती है तो अल्फा। The ship horizontal speed is this v, but with respect to the ground
there is also a motion of the transducer towards the ground, which is this one. So अगर ये A है, B है, C है, तो AC की वैल्यू क्या होगी इसमें? AC की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट थोड़ी करना है, बस आइडिया बताना है। V into cos alpha. Come again? Velocity into cos alpha. Very good. V cos alpha. V cos alpha. So the relative motion here, which we have seen, is basically V cos alpha. अगर जहाज V से ऐसे जाती है, तो towards the seabed V cos alpha से भी जाती है. Transducer is going towards the seabed. What is the meaning of that? I am coming towards you. Am I coming close? Yes, sir. I am going there. See the distance between two of us. I am going there, not towards you. I am going there. Have I come close to you? For a time, sir. Yes, sir. Yes, sir. Exactly, अगर मैं आपकी तरफ होता तो कुछ से, अगर मैं इस एंगल पे जा रहा हूं तो फिर भी नजदीक तो पहुंच रहा हूं. Yes, sir. तो इस केस में जहाज ऐसे चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस डायरेक्शन में भी थोड़ी बढ़ रही है बाय द सेम कंपोनेंट. जैसा मैंने इधर चल के बताया तो आपके नजदीक किया ना भाई, तो वैसे ही ट्रांसड्यूसर सीबेड की तरफ भी जा रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए. ऐसा नहीं कि जाके डूब जा रही है जहाज. ठीक है. जी सर. So there is a relative motion of the transducer towards the seabed also, which is given by The V cos alpha. yes, V cos alpha. इसी V cos alpha से हम V की वैल्यू निकालते हैं. So this is the basic principle. So first thing that we should know is the Doppler shift effect. Somebody for me please explain or give me the what do we call definition of Doppler shift effect, please. Here somebody repeat or tell me the Doppler shift effect, what is that? Sorry. कोई कुछ बोलेगा? It is the apparent change of the frequency when there is any relative motion between the observer and the source. Great. Very good. Well done. So if FR, FT is the transmitted frequency, if FR is the received frequency, क्या है? पेन भी बर्बाद है ये. रुको. Received frequency. If C is the speed of the wave and if V is the relative motion. If these are the quantities, then FR जो कि चेंज हो जाती है is given by FR is equal to FT into C plus V by C minus V.
हमने कहा कि the received frequency is apparently changing if there is a relative motion between the two, source and observer. But the thing is, how much of change? अगर change होता है तो कितना होता है? Well, that depends on the frequency transmitted and also the frequency or the wave speed. So suppose there is a truck. There is a truck which is moving at 50 meters per second towards the source, I mean observer who is standing here. The distance between the two is, let us say, 330 meters. ट्रक और ऑब्जर्वर के बीच में 330 मीटर का फर्क है. अब ये 330 मीटर क्यों? बिकॉज दैट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर. If this is blowing a horn at 1000 hertz or 1000 cycle per second, then what will be the frequency received by the observer? Remember, what facts did I give you? I gave you that the car is moving at the speed of 50 meters per second towards the observer. As she is moving, she is producing a horn of 1000 hertz. The distance between them right now is 330 meters per second. Oh, sorry, 330 meters, which is also the value of C. So in this, you have to calculate this. You already have FT, you already have C, and you already have V. So what is the frequency received by the observer? Yes. Are you calculating? Sir, 1357 hertz. Very good. तो जब 25 दोनों आसपास आ रहे थे तो बढ़ गया, 1000 की जगह 1357 हो गया, 1357 हो गया. That means what the observer is going to listen to is ऊपर चला जाएगा frequency. It will become higher. So as we said, Fr is equal to Ft into C plus V by C minus V. हमने देखा कि this was 50, this was 330 meter per second, this was 1000. तो इन सब की वैल्यूज डाल के हमने देखा कि इस केस में it became 1357 hertz. जो ये 1000 hertz था has apparently being received by the observer as 1357. रिमेंबर कि ये चेंज नहीं हो रहा, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी वही है, मुझको लगता है, अपीयर होता है कि ज्यादा ऊंचा है. अगर जो कार थी, अगर इससे इधर को जा रही है एट 50 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? दूर जा रही है तो क्या होगा? This becomes minus V. Coming close was V, getting away is minus V.
So what is the new frequency being received by this? .6 Very good, 736. So as you can see, the observer will be listening to it something like 736 reduced. So earlier coming on it was now it is नीचे जाता हुआ दिखेगा. So there is a direct relationship between all these factors. So we will use this frequency not as directly as this. डॉपलर लॉग में हम क्या करते हैं कि हम ये पता करते हैं कि ये कितना आया. अगर हमारे पास ये पता है कि हमने इतना ट्रांसमिट किया था, अगर हमें पता है कि इतने स्पीड की साउंड स्पीड है, तो हमारे पास ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो हम पता करते हैं कि ये कितना होगा. ये हम पता कर लेते हैं बाय डिवाइस. हमारे पास फ्रीक्वेंसी रीडर्स हैं, तो हमने इतने ट्रांसमिट करी थी, इतने रिसीव करी. मीनवाइल इतने स्पीड से चल रहा था, तो कितना रिलेटिव मोशन हुआ. वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v using this formula, but not in this straight manner, but थोड़ा सा मेहनत कर. अगले क्लास में हम लोग मेहनत करेंगे. We will derive the formula for speed of the Doppler law in the next class. Any questions so far? Before that, we will do the review of what we have done. In the next class, we'll revise that. So, any questions on the Doppler law? No. No, sir. ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे डॉपलर लॉ इससे आगे. चलो देन, बाय बाय. आई थिंक टाइम हो गया. Okay, thank you, sir. चलो, बाय बाय. हैव ए ग्रेट डे. Thanks, sir. Thank you. Signing off, sir.